Everyone, this is second session of thermal processing. We discuss temperature quotient and spoilage probability, and then we solve previous year gate problems. Temperature quotient. The temperature quotient or coefficient of reaction is used to describe the effect of temperature on the rate of reaction. Right? Effect of temperature on the rate of reaction, constant K. The temperature quotient of the reaction is defined as the ratio of the rate constant at two temperatures differ by 10 degrees Celsius. Q10. Temperature quotient. Rate constant at temperature T plus 10 divided by rate constant at temperature T. So in the numerator we have rate constant at temperature T plus 10, and in the denominator rate constant at temperature T. So temperature at which we are defining rate constant, this and this, they are differing by 10 degrees Celsius. If the reaction doubles with a 10 degrees Celsius change in temperature, in this case Q10 becomes 2. If the rate of reaction constant or rate constant doubles by increasing 10 degrees Celsius temperature, that is at temperature T rate constant K, and it doubles at T plus 10. So here Q10 becomes 2. This is formula. K2 reaction rate constant at temperature T2. K1 reaction rate constant at temperature T1 is equal to Q10 T2 minus T1 upon 10. Temperature change is 10. Right? If temperature change is 10, then Q10 upon 10, Q10 raised to the power 1, that is Q10, and it is K2 upon K1. Right? Q10 is equal to K2 upon K1, where K1 is at temperature T and K2 is at temperature T plus 10, and temperature difference on which we are defining K1 and K2 is 10. So dear students, suppose at temperature T1 reaction rate constant is K1, Q10 is given, then we can easily calculate reaction rate constant at temperature T2. T2 is also given, right? यहाँ put करो, यहाँ से calculate हो जाएगा इस formula से. So this is formula to calculate reaction rate constant at any temperature. If the reaction rate constant at T1 temperature is K1, both T1 and K1 are given, and T2 temperature is also given, Q10 value is also given, then we can find the value of reaction rate constant K2 at temperature T2 by using this formula. So in this way guys,
temperature quotient plays the role to find the reaction rate constant at any temperature, where Q10 is K2 upon K1. K1 is defined at temperature T and K2 is defined at temperature T plus 10. K2 upon K1, Q10, T2 minus T1 upon 10, and we know decimal reduction time is 2.303 upon K. So K inversely proportional to decimal reduction time. So K2 upon K1, K2 upon K1 becomes T1 upon T2, right? And F proportional to D from this relationship, so it is F1 upon F2 is equal to Q10 raised to the power T2 minus T1 upon 10. This is formula involving Q10. याद रहेगा ये? Spoilage or survivor probability. The spoilage probability is used to estimate the number of spoiled containers within a total batch of processed product. Right? We have batch in processing, in thermal processing, and each batch contains several containers of foods. We have batch processing. So in a batch, we have several containers or cans of food, liquid food, food containing moisture, right? तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है बैच थर्मल प्रोसेसिंग के लिए ये टर्म यूटिलाइज किए जाते हैं स्पॉइलेज प्रोबेबिलिटी और सर्वाइवर प्रोबेबिलिटी राइट डियर स्टूडेंट्स इफ a node is initial number of microorganism in each container or cans a node and there are containers in a batch and n node is initial number of microorganism in each container or can and there are a small r number of containers or cans in batch thermal processing. So initial number of total microorganism becomes Rn naught. Right? N is number of microorganism after thermal processing per container per can and there are a small r number of containers or cans in this batch thermal processing. So total final number of microorganism after thermal processing becomes processing time f value, right? So batch processing data are related in this formula. Now we talk about spoilage probability, where spoilage probability is involving in this analysis. Suppose friends
if the goal of preservation process is to achieve a probability of one survivor in any one of the container. Dear students, here n is the number of microorganism per container and there are a small r number of containers. So total microorganism after thermal processing is Rn and this is equal to 1 is the mathematical form of this statement. If the goal of the preservation process is to achieve a probability of one survivor in any one of the container, किसी एक कंटेनर में एक जो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, दिस इज द गोल ऑफ प्रिजर्वेशन बाय थर्मल प्रोसेसिंग. If this is the goal, we are expecting only one survivor in any one of the container and n is representing number of microorganism per container after thermal processing and there are a small r number of containers in this batch thermal processing. So final number of microorganism after thermal processing becomes Rn and this is equal to 1. We are expecting only 1 after thermal processing in any one of the container. So Rn becomes 1. So probability is 1 upon R. One microorganism in any one of the container and there are R container. So its probability 1 upon R. This probability is actually desirable if this is the goal of survivor of microorganism. Survivor probability of microorganism 1 upon R. One microorganism in any one of the container in biothermal processing of R containers. Dear friends, if we toss a coin, there are two outcomes, head and tail. What is the probability of getting head? Head, if head appears, this is one event and there are two possible events in this experiment, in this random experiment. So 1 upon 2 happening any one out of two possibles, 1 upon 2. So getting one microorganism in any one of the container and R is the number of containers. 1 upon R is the probability of survival of one microorganism after biothermal processing. If there are 5 microorganisms after thermal processing, so dear students, in this case Rn becomes 5 and this 5 out of any 5 containers. This is the probability, survivor probability. तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. गोल क्या है आपका थर्मल प्रोसेसिंग का? Getting one microorganism in any one of the container out of R containers in this batch thermal processing, getting maximum 5 microorganism in any 5 containers out of R containers in this batch thermal processing. So 5 microorganism survival in R containers. This is the probability 5 upon R. बात समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी जो है ना 1 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है. 10 upon R. This is the probability. This is the Spiller's probability. If this is the goal, 1 upon R is the goal.
survival of one microorganism in any one of the containers in batch thermal processing involving R containers. If this is the goal, then we have further simplified result. So Rn becomes 1. N is number of microorganism per container and R number of containers. So Rn is equal to 1. After thermal processing, we are expecting only one microorganism survival. So Rn is equal to total number of microorganism in R containers in batch thermal processing. So Rn becomes 1. So put the value of Rn is equal to 1 in this relationship. You will get F is equal to D log R n naught. From this, log base 10 R n naught. This is defined only for batch thermal processing is equal to F upon D. If this kind of spoilage probability is desirable, only one microorganism survival in any one of the R available containers in batch thermal processing. So R n naught is equal to 10 raised to the power F upon D. R is equal to 10 raised to the power F upon D by n naught. So R 1 upon R is the survival probability. So this is 1 upon, n naught upon 10 raised to the power F upon D. If this level of thermal processing is desirable, getting one microorganism in any one of the R containers in the batch thermal processing, so this is the survival probability, and this is equal to this only. If survival probability is this, so this cannot be equated to this. इसके लिए नहीं किया जा सकता, केवल 1 अगर डिजायरेबल है तब. So from live session number 1 to 2, we have these important results. So we have discussed each and everything, just summarized important results to solve numerical problem. In an inoculated pack study, 0.5 kg piece per can are thermally processed at 121 degrees Celsius. Weight of one can is 0.5 kg. Weight of material inside can, one can, 0.5 kg. पीस का वेट कितना है 0.5 kg, यानी 0.5 kg का जो है ना केजी पीस का एक कैन है. 121 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेसिंग हो रही है. वन ग्रुप ऑफ कैन्स कंटेन क्लॉस्ट्रिडियम species plurals spores with initial spore level of 5 into 10 to the power 10 per can. So n naught 5 into 10 raised to the power 10 spores of this Clostridium species per can initially is this. Total number of spores of Clostridium species per can is this initial. So this is one group of batch thermal processing, one batch of thermal processing, right, in which we have R cans and 0.5 kg peas are in each can. There are total R cans and weight of peas in each can
0.5 kg. So this is first batch, which is being processed at 121 degrees Celsius. Another groups of cans contains another spores, Bacillus species plurals spores. So this is another type of microorganism in another groups of cans. In another batch of R cans, weight of each in each can 0.5 kg. या इसमें भी वही है, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है. Another group of cans contain these spores, right? It is desired to have a spiralous probability of 5 in 100 cans after thermal processing, right? Your friends, 5 in 100 cans. So per can, 5 upon 100. This is a spiralous probability. We are expecting after thermoprocessing, there are 5 microorganisms per 100 cans. So 5 upon 100 upon 1. It can be right like this. It can be written like this, right? Number of microorganisms after thermal processing per n. So this is the value of n. And this is the value of n naught. In first batch and in both batches, we are expecting this level of thermal processing. Spiralous probability 5 in 100 cans. 5 upon 100 microorganism per can. We can say like this also. And there are R cans in each batch, right? The decimal reduction time of Clostridium spp and Bacillus spp at 121 degrees Celsius are 2.5 minutes and 6 minutes respectively if all the cans receive same lethality. The initial number of spores of Bacillus spp per gram of piece is. Initial number of second type of microorganism is not given in the problem, and this is desired actually. So dear students, in order to have same, in order to give same lethality in both cases, in both batch thermal processing time must be same for both batches. So find processing time in order to get such level of thermal processing. In order to get this spiralous probability, 5 upon 100 per can. Processing time for Clostridium spp spores, C stands for Clostridium species. Fc is equal to dc. Dc is decimal reduction time for Clostridium species. Log 10 total initial number of microorganism in first batch. Initial number of microorganism in first batch, and this is the final number of microorganism after thermal processing, and a spiralous probability is defining this value. Decimal reduction time for Clostridium species is 2.5 minutes. Log 10 5 into 10 to the power 10 into R per can. Number of microorganism, Clostridium microorganism is this, and there are R cans in first batch. So total number of Clostridium spp spores initially in the first batch, and R into n. This is the total number of microorganism after thermal processing.
per container 5 into 10 to the power minus 2. So in R containers, R into this, R cancel out, and we are getting 30 minutes. 10 to the power minus 12, 12 into 2.5. So processing time 30 minutes. For Bacillus spp spores, this is the processing time. Total initial number of Bacillus spores in second batch having R containers. In one container there are n naught number of second microorganism spores, and there are R containers. So total number of original microorganism, second microorganism in second batch having R containers, and this is initial. R cancel out, and final जो है ना, we need final level of this 5 into 10 to the power minus 2. इनकी वैल्यू ये चाहिए, दोनों में ये चाहिए. फाइनल जो है ना लेवल ये चाहिए. एस्पायरस प्रोबेबिलिटी इन बोथ कैंस, both batch this. So after equating this and this, we can find the value of n naught. This is the initial number of Bacillus spp spores per can, that is in 0.5 kg piece. So after equating these two, processing time, we get 5000 Bacillus spores per can, and weight of each can is 0.5 kg. 0.5 into 1000 gram, 500 gram. So in 500 gram, 5000 initially surviving Bacillus spp spores. So per gram is 10. So such type of problem cannot be handled by ratification. This needs concept. स्टेटमेंट रीड होनी चाहिए प्रॉपरली, टर्म्स के मीनिंग पता चाहिए. लेथैलिटी, सेम लेथैलिटी मीन्स प्रोसेसिंग टाइम इक्वेट करो, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी उसको भी डिकोड किया गया है. 5 in 100 कैंस after thermal processing. This is our goal for both batches. First batch contains R cans. Weight of each can 0.5 kg, and inside each can initial number of microorganism for first Clostridium species given. सब कुछ डिस्कस कर दिया ना. इस तरह से डिकोड करोगे तब जाकर काम बनेगा. The decimal reduction time D121, decimal reduction time at 121 degrees Celsius, and the Z value of the thermophilic spores in milk were found to be 60 seconds and 11 degrees Celsius. So D121 60 seconds and F value 11 degrees Celsius respectively. The heating time required at 141 degrees Celsius for a 10 log cycle duration, a 10 log cycle reduction in population in second is. Dear friends, we need F value at 141 degrees Celsius. So we need decimal reduction time at 141 degrees Celsius and log cycle reduction n naught upon n base 10. So this is actually given 10, but this is not given. So we can't find the value of this without calculating this. We have formula to calculate this. dt2 upon dt1 is equal to 10 raised to the power t1 minus t2 upon z. At T1 temperature, this is the decimal reduction time. At T2 temperature, this is the decimal reduction time, and this is the Z value. In the first live session, we have discussed Z value in detail, right?
from the thermal resistance curve. Plot of log of decimal reduction time against temperature. There is a straight line and equating slopes in two different cases. We got this relationship. Already we have discussed this in detail, not just a formula, but in this second session during solving problem, we are not going to discuss once again. Each and everything is clear. So dear friends, we can calculate dt2, dt1 10 t1 minus t2 upon z. Decimal reduction time at 141 degrees Celsius. This will be less than a decimal reduction time at this, because T2 is greater than T1. T1 is 121. 121 minus 141 by Z value. Where is the Z value? 11 degrees Celsius. Remember, the unit of numerator and unit of denominator must be same. If temperatures are in Celsius, degrees Celsius, then Z value must be in degrees Celsius. If temperature are in Fahrenheit, so Z value must be in Fahrenheit. And how to convert change in temperature in Fahrenheit to change in temperature in Celsius? And Z value is also change in temperature, right? For 10-fold change in decimal reduction time. Z value is change in temperature. Z is change in temperature. ये टेम्परेचर का चेंज है. दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर फॉर 10-fold चेंज इन डेसिमल रिडक्शन टाइम में डिस्कस कर चुका हूँ. तो दोनों के यूनिट सेम होनी चाहिए. ऐसे ऐसे काम होता है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी कैलकुलेट डेसिमल रिडक्शन टाइम एट 141 डिग्री सेल्सियस by using this formula and putting decimal reduction time, decimal reduction here to get the processing time at 141 degrees Celsius. Is it 2023? ये हर साल पूछा जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ये टॉपिक है. The microbial death kinetics for a food's suspension follows the equation log n naught upon n is equal to 1 plus t minus tl upon d, where n naught initial microbial load, n microbial load after time t, tl lag time, d decimal reduction time. The correct statement for this equation is the time required to reduce 10% of the initial population is the lag time. The time required to reduce the initial 90% of the population is the lag time. So time, lag time. Time required is equal to lag time. So first we equate time, processing time is equal to lag time, right? So dear friends, this is death kinetic equation, right? And we are assuming time required is the lag time, t is equal to tl. ए बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? टी टीएल के इक्वल होगा. तो जो है ना रिडक्शन कितनी होगी इनिशियल का, 10% की 90%. और दो वाले में क्या था? टाइम रिक्वायर्ड टू किल द फर्स्ट 90% पॉपुलेशन इज लोअर देन डी वैल्यू ऑफ द सेम टेम्परेचर. लैग टाइम अप्रोचेस डी वैल्यू एज. और सेकेंड में जो है ना डी वैल्यू लैग टाइम डेसिमल रिडक्शन टाइम से कोरिलेट था. तो फर्स्ट दो को चेक कर लेते हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम एंड लैग टाइम है उस दोनों इक्वल होता है तो पॉपुलेशन की कितनी रिडक्शन होती है, राइट? फर्स्ट दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग. तो टी इज इक्वल टू टी एल, टी इज इक्वल टू टी एल, दिस विल बी 0 log n naught upon n 1, n naught upon n 10 1, n upon n naught 1 upon 10, 1 minus n upon n naught 1 minus 1 upon 10, n naught minus n upon n naught into 100. It is coming 90% reduction. 90% reduction. N naught is greater than n. So this is the percentage reduction if processing time is equal to lag time involved in this problem. So the time required to reduce the initial 90% of the population is the lag time. Processing time अगर lag time के इक्वल लिया जाए, lag time इसमें कितना उसके अगर इक्वल लिया जाए तो जो है ना उतने टाइम में जो है ना पॉपुलेशन 90% से रिड्यूस हो जाएगा. 90% रिडक्शन ऑफ
species. A milk sample contains 4 into 10 to the power 5 spores of Clostridium botulinum. Decimal reduction time D value of 1.2 minute at 121.1 degrees Celsius. Right. This is a standard processing temperature of this Clostridium species, Clostridium botulinum. And 7 into 10 to the power 6 spores of L monocytogenes. Its the D value 0.9 minute and same processing temperature 121.1 degrees Celsius per ml. बात समझ में आया? Per ml. This is Clostridium botulinum per ml and 7 into 10 to the power 6 second type of microorganism per ml. Milk में है. If the milk is heated at uniform temperature of 121.1 degrees Celsius to obtain a probability of spoilage of 1 in 1000 canes. 1 in 1000 canes. It means 1 upon 1000 per cane. We can write like this also. Right. So dear student, this is your N. So final Rn is, you can calculate 1 upon 1000 R into this. The minimum heating duration in minutes is, if the milk is heated at uniform temperature of 121.1 degrees Celsius to obtain probability of spoilage. ये फाइनल हमारा ये चाहिए. और इनिशियल कितना है? Rn नॉट प्लस क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या बी सिंबल स्मॉल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम R into 7 into 10 to the power 6 and initial microorganism, second microorganism मोनोसाइटोजेंस, वो कितना है? R into R नंबर ऑफ कंटेनर्स है. बात समझ में आ गया? ये 4 into 10 to the power 5 है and this is 7 into 10 to the power 6. ठीक है? Done. The minimum heating duration in minutes is, the minimum heating duration. दोनों का जो ना heating duration जो ना कैलकुलेट कर लो. Right. For botulinum, it's decimal reduction. जिस टाइम पर, जिस टेम्परेचर पर हमें प्रोसेस करना, उस टेम्परेचर का हमें डेसिमल रिडक्शन टाइम चाहिए. log base 10 Rn not for botulinum and Rn, ये आपका कितना है? If you take 100 containers or 1000 containers, so it becomes 1. ठीक है? R के वैल्यू हमने 1000 रखा, नहीं भी रखे R भी सिंपली रखोगे तो वही बात होगी. Rn नॉट अपॉन Rn, R इंटू 1 अपॉन 1000. R कैंसिल हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा. चला गया, ये बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है. आप सिंपली जो है ना, क्यों जो है ना कन्फ्यूजन हो, ये रखिए, ऐसे कर लीजिए. R कैंसिल हो जाएगा. N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू 1 अपॉन 1000 नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कंटेनर. तो 1000 ऊपर चला गया कि नहीं, देखो. एंड N नॉट 4 into 10 to the power 5, ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं है. या 1000 कंटेनर एज्यूम कर लो. तो 10.322 मिनट is required. 10.322 minutes of thermal processing is required for Clostridium botulinum in order to get such level of survival probability or spoilage probability. 1 in 1000 containers, that is 1 upon 1000 per container. Right? बहुत ही इजी प्रॉब्लम होता है, इसको समझ के करेंगे तो. Similarly, you calculate processing time for same level of survival of microorganism
for monocytogenes. कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कोई, ऐसे कर लो. n is 1/1000, n naught is given, 1000 comes in numerator. We are getting 8.86 minutes. So dear friends, in order to get a 1 in 1000 Kelvin level of processing, botulinum requires 10.33 minutes and monocytogenes required 8.86 minutes. So minimum processing time of the milk is this. Milk हमारा एक ही है, we have a same milk. So in that milk there are two species, botulinum and monocytogenes. So in order to get this level of survival probability 1 in 1000, that is 1/1000 per Kelvin, we need to process the food for minimum 10.3222 minutes. इतने मिनिमम टाइम के लिए करना पड़ेगा. अगर इसके इतना करोगे, कहाँ आ गया, इतना करोगे तो ये तो अभी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस लेवल के नहीं आएंगे. 1 in 1000, 1 in 1000 नहीं आएंगे. तो जो है ना, इसको वेट करो, इसका वेट करो कि भाई ये कितने टाइम में जो है ना इस लेवल का जो है प्रोसेसिंग दे रहा है 1/1000, राइट. इतना देर तक करेंगे, ये तो ऑलरेडी हो गया रहेगा ना, बिकॉज दिस गिव्स सच लेवल ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग इन 8.86 minutes only, but this is not giving such level of thermal processing in 8.86 minutes. This microorganism gives this level of for this microorganism, if we desire to get this level of 1 in 1000 processing, we have to process the material milk for 10.322 minutes. तो आप क्लियर समझ गए. द मिनिमम हीटिंग ड्यूरेशन इन मिनट्स इज, समझ के नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम यहां से आएगी. अ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट pasteurizes a batch of 12,500 liter whole milk to inactivate the pathogen Coxella burnetii. Decimal reduction time of 14 seconds at 72 degrees Celsius. Pasteurization इसी टेम्परेचर पर होती है. In order to inactivate this microorganism, priority packing in 500 milliliter pouches. Total amount of milk is this, and we have to produce a pouch of 500 ml. बात समझ में आया. पर पाउच जो वॉल्यूम होगी वो कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन होता है नंबर ऑफ केन्स, नंबर ऑफ पाउच, नंबर ऑफ कंटेनर्स, तो ये नंबर ऑफ पाउचेज हो गए जो आपको आर को बताएगा. द इनिशियल काउंट ऑफ द नोटेड ऑर्गेनिज्म इज 10 per milliliter. तो हियर 10 per milliliter, 10 पर पाउच नहीं बोला जा रहा है, इसलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाउच. अगर पर पाउच बोल देता तो पाउच की संख्या कैलकुलेट करनी पड़ती. देन आर एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर एन फाइनल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो पर ml माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गिवन एंड टोटल liter is given, so we can calculate directly per ml with the help of per ml information. So initial number of microorganism in total milk. So this is total milk in liter, this is ml, and there are 10 per ml. Clear है? 10 per ml. So it is coming this 1.25 10 to power 8. Arrange like this. इसको डेसिमल में भेज दो. फर्स्ट डेसिमल है ना, फर्स्ट जो है ना इस तरह से जो है कन्वर्ट कर लो 10 to power 9. For this batch pasteurization process at 72 degrees Celsius resulting in no survivor any of the package, the
process if value in second is processing time we have to calculate and the survivor probability. There is no any microorganism in any of the pouch. किसी भी पाउच में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो फाइनल कितना होना चाहिए? फाइनल जो है ना, आप ऐसे ना करना, फाइनल जो आपका n है उसको 0 नहीं करना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? डियर स्टूडेंट्स, 0.125 into 10 to the power 9 initial number of total microorganism, right? And suppose final number of microorganism 0.125, नंबर ऑर्गेनिज्म की जो है ना 1-2 में होगी कि 0.125 में होगी, राइट? वो नंबर में होंगे, नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5, ना कि 0.1। तो अगर मैं फाइनल इस लेवल का कर दूं, इट मीन्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग के बाद नहीं है। तो इसको हमने ये कर दिया, अब ये कैंसिल हो जाएंगे और 9 इधर आ जाएंगे, यानी कि हम 9 लॉग साइकिल तक प्रोसेस करेंगे, 9 लॉग साइकिल तक प्रोसेस करेंगे, राइट? तो 9 इंटू दिस 126 सेकेंड, 0 नहीं करेंगे हम। इन ईच लॉग साइकिल 1/10 रिडक्शन होती है। तो इन फर्स्ट रिडक्शन number of microorganism becomes 1.25 in first 1 log cycle of processing. Number of microorganism becomes this in first log cycle of processing. In second log cycle of processing, number of microorganism becomes, क्योंकि 1/10 से रिडक्शन होती है इन 1 लॉग साइकिल, इफ वी प्रोसेस, इफ वी हीट मटेरियल फॉर ड्यूरेशन इक्वल टू 1 लॉग साइकिल, ड्यूरेशन इक्वल टू 1 डेसिमल रिडक्शन टाइम, नंबर्स डिक्रीजेज बाई 110। तो ये कितना हो जाएगा? in second log cycle of processing, in second decimal reduction time 1.255 in third, ये थर्ड में हो जाएंगे, फोर्थ में हो जाएंगे, फोर्थ लॉग साइकिल प्रोसेसिंग में, या फोर्थ डेसिमल रिडक्शन टाइम में, इन फोर्थ डेसिमल रिडक्शन टाइम, इन फिफ्थ डेसिमल रिडक्शन टाइम, इन सिक्स्थ डेसिमल रिडक्शन टाइम, आफ्टर सेवेंथ डेसिमल रिडक्शन टाइम, आफ्टर एट्थ decimal reduction time, still we have 1.25 number of microorganism after 8 decimal reduction time। बहुत तरीके से समझा रहा हूं। तो यहां बोल रहा है कि एक भी नहीं होना चाहिए, तो एक और डेसिमल रिडक्शन टाइम चलाना पड़ेगा, इसीलिए हम इस तरह से ऐसे अरेंज करते हैं इसको, इसी वाले को। फिर जो 10th घटेगा तो 0.125 बचेंगे आफ्टर 9th decimal reduction time। So we have processed material for 9 decimal reduction time, so 9 into decimal reduction time, this is the processing। ऐसे भी तो कर सकते हैं, वही यहां पर किया हूं, तो इसलिए जो ना माइंड में ये फिट होना चाहिए। 9 into decimal reduction time, 9 into decimal reduction time is 14 seconds, so 14 into 9 second is processing time in order to get no survivor. A batch of 10,000 liter milk is to be sterilized and thereafter packed in
20,000 पैकेट्स ऑफ 500 ml इच। भाई जो ना 10,000 लीटर का जो ना टोटल मिल्क है एंड 20,000 पैकेट बनानी है तो हाफ लीटर की बनेगी। बात समझ गए? तो आर इज दिस। अगर पर एमएल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो फिर जो ना हम पर पैकेट के बाद से जो ना यानी कि नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू की जरूरत नहीं है। द मीन स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एसपीसी ऑफ बैचलर्स subtilis in 100 sample of fresh milk was found to be 50 per ml। हमने इसमें से 100 पैकेट निकाला और उसके बाद जो है ना मीन स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के हेल्प से हमने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग की और बताया गया कि ये 50 पर ml आता है। वी हैव टोटल 2000 पैकेट्स each 500 ml। We have taken 100 samples, 100 पैकेट्स, ठीक है। और प्लेट काउंट से सभी पैकेट में जो है ना हम प्लेट डालेंगे और काउंट करेंगे। तो किसी में आएगा 40, किसी में आएगा 60, किसी में आएगा 55, किसी में आएगा 45 पर ml ऑफ द मिल्क फ्रॉम इच 100 पैकेट्स जो हमने निकाल लिया, रैंडमली निकाला है 100 पैकेट्स। उस सब में से उस 100 में से एक एक ml हम जो है ना प्लेट पर रख के काउंट कर रहे हैं। तो पर ml किसी में 46, 47, 48, 60, 70 आया, उन सब का एवरेज निकाला है तो 50 आया। सो 50 इज पर ml number of microorganism initially. The milk is to be sterilized such that each 500 ml packet is completely devoid of the same organism। हाँ, पूरी की पूरी खत्म हो गया। फिर उसी तरह सेकंड वाला प्रॉब्लम है, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आफ्टर थर्मल प्रोसेसिंग। सेम प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स। सो इनिशियल नंबर ऑफ, तो यहां पर आप आर एन नॉट और आर एन करके भी कर सकते हो। नंबर ऑफ पैकेट्स ये चलेगा, या जो है ना आपको चाहिए एक्चुअल में दिस इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिशियली बिफोर थर्मल प्रोसेसिंग एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर थर्मल प्रोसेसिंग, यही है। तो अपने पास अगर पर ml है एंड टोटल मिल्क इतना है तो इसी में डायरेक्ट निकाल लो ना, कि पहले जो नंबर ऑफ पैकेट निकालो, पर पैकेट कितना है, फिर जो ना पर पैकेट इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना पैकेट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एन नॉट इनिशियली कितना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ml में कन्वर्ट किया, पर ml 50 आया है। सो इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज दिस 5 × 10⁸। तो जो है ना इन अगर प्रोसेसिंग जो है ना किया जाए फर्स्ट डेसिमल रिडक्शन टाइम तक के लिए, इफ वी प्रोसेस द फूड टिल द कंप्लीशन ऑफ 1 डेसिमल रिडक्शन टाइम, तो 1 कितना हो जाती है, 1/10 रिडक्शन हो जाती है 1 डेसिमल रिडक्शन टाइम में। तो इसी प्रकार जो है ना आपको 9th जो ना 8th डेसिमल रिडक्शन टाइम में क्या मिलेगा, 5 × 10⁻0 इन 8th डेसिमल रिडक्शन टाइम। तो स्टिल आफ्टर 8th डेसिमल रिडक्शन टाइम वी हैव 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें चाहिए नो सर्वाइवर, तो इसको ऐसे बना दो 0.5 × 10⁻, ये 1 था ना, अब बन जाएगा 10⁻1, 0 था 10⁻1, राइट। इसको क्या करो 5 है 0.5 ये। अब जो है ना अब प्रोसेस और करो, 1 डेसिमल रिडक्शन टाइम तक और प्रोसेस करो, तो बन जाएगा ये 9th डेसिमल रिडक्शन टाइम एंड ये 0.5 मीन्स नो सर्वाइवर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर 9th डेसिमल रिडक्शन टाइम, राइट। तो 9 × D इज द आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉग साइकिल रिडक्शन फॉर, हियर टाइम इज नॉट डिजायरेबल, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल रिडक्शन टाइम 9, मैक्सिमम इसे ऊपर कितना भी कर सकते हैं। Mycobacterium tuberculosis is having decimal reduction time of 13.5 seconds at 72 degrees Celsius. D72 13.5 decimal reduction time is the function of temperature. So temperature is always associated with decimal reduction time symbol D. 72 is given 13.5 degrees Celsius. The count of the organism is to be
reduced by 8 logarithmic cycle in milk pasteurization with adequate holding at a temperature of 85 degrees Celsius. Decimal reduction time at 72 degrees Celsius, and but processing temperature is 85 degrees Celsius. And we have to process this milk by 8 logarithmic cycle. Log NO upon N base 10 is equal to 8. This is given. ये given है. Processing temperature is given if the Q10 value for the organism is 7.5. Q10 value of organism give the minimum holding time for the desired sterility of this particular organism at 85 degrees Celsius. Dear friends, we need decimal reduction time at 85 degrees Celsius. So we have formula dt2 upon dt1 is equal to 10 to the power t1 minus t2 upon z value. Z value is not given in the problem, so we don't use this. Here Q10 is given. So dear students, this is the relationship already we have established. F2 upon F1, Q10 T1 minus T2 upon 10. F2, that is processing time at 85 degrees Celsius. So T2 is 85 degrees Celsius, T1 72 degrees Celsius. बात समझ में आया? Right. So F2, F1 into this, and F2 is also D1, D2. F1 is D1 log NO upon N. So here D1 is given. Decimal reduction time at 72 degrees Celsius is given, and log NO upon N is given, right? Q10 is given, T1, T2 are known, so we have calculated F2 by using this formula. अगर वही F Z वैल्यू गिवन रहता तो यहाँ से dt2 कैलकुलेट करते, एंड F2 dt2 log NO upon N base 10 ये निकल के आ जाता, बट यार Q10 दिया हुआ था, टेम्परेचर कोसेंट दिए हुए थे, तो टेम्परेचर कोसेंट को इन्वॉल्व करता हुआ जो है प्रोसेसिंग का ये फार्मूला होता है. F1 जानती है D1 log NO upon N, D1 NO upon N log NO upon N is given in the problem, D1 given in the problem, तो कैलकुलेट कर लिया, Q10 गिवन, यहाँ से सॉल्व हो गया, राइट. बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी हमारे हैं जो हम आगे के सेशंस में करेंगे, सेशन ही नहीं सेशन, एवरी ईयर जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी.